Good morning to all the students. Is the topic visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What we were seeing, I hope everybody is aware. We were seeing organization of an ICU. Under that, we had seen about an ICU principles, purposes, how the admission procedure, daily routines, what you have to follow according to the system, what is the admission criteria. Soon after that, we had seen certain equipments what are present in the NICU. After that, we had seen straight away the topic, which is organization and physical setup of an ICU. Under that, we had seen about the space, facilities, what should be present. Then intensive care of newborn at high risk, demands of what all things. Then physical setup we had seen. Under that, physical facilities we had seen space, how much space is to be given, how much it was, 100 square feet or 10 meters square. Each infant को कितना space should be provided, a minimum of how much area is to be provided. Talking about space, a separate space or within the nursery should be there for breastfeeding or promotion of breastfeeding or expression of breast milk, or visitors should not be allowed to go in that zone. Location should be, it should not be very far, means labor room and neonatal unit, it should be located close by, so that the baby or the infant or the newborn is being transferred to the area, high risk area, very easily, and within no time the baby is being transferred and is being given the care which the baby wants or require. About the floor plan we had seen, it should be square in shape so that abundant of open space has been there and it's been utilized. Then ventilation, effective air ventilation should be there so as to reduce the nosocomial infection. Lighting should be there. And environmental temperature should be maintained, that is should be temperature of the particular NIC should be maintained, that is 28 degrees centigrade Celsius, or else it can be plus minus 2, it can be 30, it can be 26. Then handling and social contacts, we had seen communication system, it's that intercom should be there so that they can contact each other, the labor room unit or the NIC unit, for any sort of an emergency they can contact. Then electrical outlet should be there and they should be checked for any sort of leakage or normal grounding is there or no. Personals, then we had seen according to American Academy of Pediatrics that one nurse is needed to offer special care for at least 3 babies or intensive care to one infant. Normal babies में 3 babies को और intensive care के है तो 1 को. Otherwise normally कितने पर्सनल होते हैं, अगर 8 bedded NICU is there then 8 nurses should be sanctioned, 8 nurses होनी चाहिए जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ 2 नर्सेज इन ईच शिफ्ट, जिसमें से एक एडिशनल सिस्टर इंचार्ज होती है जो मॉर्निंग में प्रेजेंट होती है. देयर शुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे तीनों शिफ्ट में. आई टोल्ड यू ऑल, आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट इफ इट इज नॉट इक्वल, इफ इट इज एन इवन ऑड नंबर, इवन नंबर इज इट इज ऑल राइट, सबको डिवीजन मिल जाएगी. But if it's an odd number, what happens? Somebody will get more patient in the shift, somebody will get less, but it should be divided like every time only that particular person is not having the extra babies. Then we had seen neonatal nursing and their role. Then roles and responsibility of a neonatal nurse. Then major responsibility of being a neonatal nurse, under that we had seen according to the infant care, special care, medical charts, communication and the types of patients. From today on we will see prevention of nosocomial infection. हाउ वी कैन प्रिवेंट एंट्री टू दी NICU. आप जब भी NICU में एंटर हो रहे हैं तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द हाउस शूज, वट एवर शूज यू आर वेयरिंग, नॉट हाउस शूज डजंट मीन कि घर का शूज, वट एवर शूज यू आर वेयरिंग, वट एवर footwears you all are wearing, you're supposed to remove, and then you're supposed to wear NICU slippers before entering. If NICU slippers are not there, many a time they use shoe cover, so you're supposed to make sure that you are using the shoe cover on top of your shoe whatever you are wearing.
The nails should be kept short and trimmed. जो अगर नर्स है उसको उसके बारे में they are talking, nails should be kept short and trimmed. Scrub thoroughly both the hands and forearms up to the elbow with soap and water for at least 2 minutes after removing the watch, rings, bangles, etc. First of all, the nurses should have cut shortened nails or trimmed nails, no, without any nail paint or anything. They should scrub the hands. Scrubbing proper procedure से होना है through, right up till the elbow with soap and water for at least 2 minutes. Normal hand washing procedure as we follow. And they should not have any watch, ring, bangles. ये सब हटाना है. Why? Because it is any way in any means the baby should not be harmed. So maybe because of the rings and all, baby is getting hurt. That is why. Housekeeping rituals. Housekeeping में क्या है? Universal precautions for prevention of HIV should be followed at all times. Then the floor and the wash basins must be mopped and with phenyl once in each duty shift. Universal precautions first of all लेने हैं in order to prevent HIV and it should be followed in all times. Means all the shift में सारे time ऐसे नहीं है morning shift में only they are following, other shift में follow ही नहीं हो रहे. Next is the floor जो भी है वो the or wash basin, the area, floor as well as the wash basin, they should be mopped with phenyl once in each duty. हर एक shift में एक बार होना ही है. Disinfection of the equipment is very important. Chittle, forceps and thermometer should be kept in 5% of Savlon freshly prepared every day. हर रोज बदल बदल कर prepare करना है. ऐसे नहीं one day only they are preparing, the other day they are not. Every day the solution should be changed and they should be kept in that solution, not thermometers. And then inscribe the date of preparation on the bottle पे name लिखना है. Like you I don't know how far you are practicing or no, you were practicing in first year. Kanupriya, you all were practicing every time first year में vitals लेने के बाद आप bottles में name label लिखते थे, or you have never practiced this? No, ma'am. So we should practice. If you have not practiced, you should have practiced that thermometer का solution या कुछ भी कोई सा भी procedure में if you are using something, you're supposed to write and mention the date and time of that particular thing so that the next person whosoever is using is not reusing the thing, rather changing it up. And oxygen tubings and humidifier should be changed. जो भी humidifier का chamber है, oxygen tubings है, उनको change करना है और every day fresh water, sterile water उस पे change करना है. And if it has been shifted from one patient to other, again सारा कुछ change कर ही shift करना है. Then I told you all about the levels of an ICU, a neonatal unit. Prevention of nosocomial infection, I hope it is clear. It was basically in 3 headings. Entry to the NICU, कैसे entry होना है, housekeeping rituals, then disinfection of equipments. Levels, there are 3 levels in this. Level 1, level 2 and level 3. A level 1 neonatal nurse performs basic newborn care, often in a hospital nursery that cares for healthy newborns. Activities include bathing, feeding, diaper changing as well as newborn. तो लेवल 1 में कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या काम है नर्स के? बेसिक न्यूबॉर्न केयर, जैसे वाइटल्स लेना, or then to properly bathe the baby or else change the clothing of the baby, feeding procedure of the baby, diaper changing. और newborn का कोई सा भी तो भी care होगा, that particular nurse has to give to the baby. That is level 1 care. Level 2 में neonatal nurses offer an intermediate level of newborn care. Intermediate level of newborn care है जिसमें premature babies की इन्वॉल्वमेंट है. यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज की थी लेवल 1 में, यहाँ पर प्रीमेच्योर जो न्यूबॉर्न है दोज आर प्रीमेच्योर एंड दोज हु आर इल और हैव कंजेनाइटल डिफेक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द फिजिशियन, और जिनको फिजिशियन की नीड है और जो प्री टर्म है और जिनको न्यूबॉर्न प्रीमेच्योरली बेबीज हैं, दोज हु आर इल और जिनको कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, उन लोगों की केयर करने के लिए लेवल 2 न्यूनेटल नर्सेज का रिक्वायरमेंट है.
Level 3, they generally work in an NICU, caring for newborns that need more complex care than what available in in level 1 or level 2 nursery. Level 3 में they are only solely working in the NICU unit, neonatal intensive care unit. They care for newborns जो कि फर्स्ट और सेकेंड लेवल की केयर के लिए नीचे है, those who are fully and solely responsible for level 3 care. So that means level 1, level 2 are not much severe. Level 3 care is a care which is severe most. Severe patients or severe clients are included in this. Qualifications and requirements. Neonatal nurses are registered nurses, first of all. इसी की वजह that is why they should have an Associate of Science in Nursing or Bachelorate of Science in Nursing degree. Associate of Science, in place of this you can write Masters, M.Sc, Masters of Science in Nursing. You can write Bachelor of Science in Nursing degree. Some countries or institutions may also require midwifery qualification. Then records and records. Strict record of daily input and output should be maintained for all the patients. A logbook for all the available in PICU should be maintained, incorporating address and telephone number of the supplier, date of purchase, cost, list of accessories in stock unit. Yeah, strict what records and reporting will you be doing? Recording of strict IO charting means input and output of the particular client. क्या input है क्या output हुआ. और अगर when you're talking about PICU, that is pediatric intensive care unit, वहाँ पर log book होना है जिसमें नॉर्मल फुल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो भी है, जो जिसका भी जो भी पेशेंट है उसकी, अगर कुछ सामान लिया तो उसका डेट ऑफ परचेज, कितने कॉस्ट में आया, एक्सेसरीज इन स्टॉक, जो भी एक्सेसरीज है स्टॉक में वो लिखना है. सो दिस इज एन रिकॉर्डिंग. A record of patient's admission, diagnosis, date of discharge, attending physician should be kept in the NICU. ये सारा चीजें, these are all coming under register maintenance. तो पेशेंट एडमिट कब हुआ, डायग्नोसिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड, डिस्चार्ज प्लान है, अगर नहीं है तो यू आर सपोज्ड टू पुट अ हाइफन और यू कैन राइट नॉट येट डिस्चार्ज. देन अटेंडिंग फिजिशियन कौन है, ये सब कुछ उसमें मेंशन करनी है. अब कंक्लूजन डिपेंड्स अपॉन आप ओवरऑल क्या कंक्लूजन है, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द transportation of the child, whether you are talking about the services of the child provided, or whether you are talking about the roles and responsibilities and neonatal nurse. Any doubt you all can ask before starting the next topic. If you have any doubt in this, you all can please ask, or any doubt in the previous sections. Till here we had seen what I had stopped, whatever I asked you all not to see for that particular time was equipments in an ICU. So today we will see incubator, we will see radiant warmer. Yeah, any doubt? If you all have no doubt, then we will start these two procedures. Any doubt you all are having? No, ma'am. Okay, then we will see incubators. Any idea what do you mean by incubator? Any idea? अगर idea है तो you can share, नहीं है तो we will start. मैम इंक्यूबेटर No मैम एक idea. हाँ. इक्विपमेंट होता है जो कि मतलब रूम को वार्म अप करने के लिए होता है. ये इसलिए यूज करते हैं कि अगर बेबी उससे आ रहा है उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए होता है बेसिकली ये. हाँ, you can say anything else. Anyhow, इंक्यूबेटर क्या है, एक ओपन वार्मर है. नॉर्मल वार्मर कैसे, रेडिएंट वार्मर आपको दिखाए दे दैट टाइम. नॉर्मल रेडिएंट वार्मर कैसे दिख रहे हैं, द अदर डे आई शोड यू ऑल. ये है रेडिएंट वार्मर, ठीक है. दिस इज अ टाइप. इंक्यूबेटर क्या है, ये वाला पार्ट. दिस इज द इंक्यूबेटर. तो देख के क्या लग रहा है, जो आपको देख के लग रहा है दैट इज द डेफिनेशन. एक मैम दिख नहीं रहा है. इनक्लोज, नॉट विजिबल. नो मैम.
What you can see in the screen? मैम रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स वाला स्लाइड. Now, नो मैम. 1 second. Now is it visible? नो मैम. Is it visible now? Visible now? यस मैम, इनक्यूबेटर वाला स्लाइड है. हाँ, नाउ या सी, इसको देख के क्या लग रहा है, ये कैसा डिवाइस है? जो दिख रहा है दैट इज द सेम थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन. सो इट इज व्हाट? इट इज एन एनक्लोज्ड डिवाइस जिसके अंदर क्या रख रहे हैं? Usually we are keeping preterm babies. For what you are placing? So so that you can provide a protective environment to the particular newborn or a particular preterm infant. क्यों आप रख रहे हैं इसको? So that you are providing a protective environment and protective temperature to the baby, because the baby's temperature inside the mother's womb is entirely different than the temperature of the outside environment. In order to maintain that temperature, you are keeping the baby under the incubator. अब incubator की काम क्या होती है? क्या आपको लग रहा है incubator की काम क्या होगी? क्या काम करेगा incubator? मैम ह्यूमेस्टेसिस को मेंटेन करेगा. हाँ, और anything else? Anything else an incubator can do? Incubator will do everything. देखो incubator यहाँ पर है ना, an incubator is what? It is an incubator or an open warmer. Open है, इधर से spaces रहता है जिधर से you can provide baby को supplements, or you can speak to the baby, or else you can keep the baby inside. So it is an apparatus which is used to maintain the environmental conditions suitable for a neonate. अगर कोई neonate है तो उसके लिए maintaining the environmental conditions or temperature, you can say it is used in preterm births or for some ill full term babies. या तो preterm को रख दोगे, या फिर कोई full term baby तो है but they are not, they have some or the other disorder or they have some or the other illness जो कि आपको incubator में रखना ही है. Talking about possible functions of a neonatal incubator are, अब neonatal incubator के अंदर क्या क्या हो सकती है? Oxygenation. Oxygenation कैसे होगी? Through oxygen supplementation by head, hood or nasal cannula. I hope you all remember oxygen hood. I had showed you the other day the picture. तो ऑक्सीजनेशन हो सकती है न्यूनेटल इंक्यूबेटर के अंदर में. ऑक्सीजनेशन कैसे कर सकती? इधर बाय हेड होल्ड होती है बेबी की, और एल्स नेजल कैन्युला, और इवन कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर विच आई टोल्ड यू ऑल, सीपैप होती है, और मैकेनिकल वेंटिलेशन. Infants respiratory distress syndrome is the leading cause of death in preterm infants, and the main treatments are CPAP in addition to administering surfactant and stabilizing the blood sugar, blood salt and blood pressure. This is just the thing कि ऑक्सीजनेशन का नीड होता है. ऑक्सीजनेशन अगर चाहिए तो कैसे आप कर सकते हैं, और एल्स इन सम केसेस CPAP is involved, or mechanical ventilation you can say. If some babies which are having, some infants have respiratory distress syndrome, so that is the main basic leading cause in the preterm infants. So उसके लिए main treatment they are giving, that is CPAP. Then next is observation. Modern neonatal intensive care involves sophisticated measures of temperature, respiration, cardiac functioning, oxygenation and brain activity. So then observation की, I was asking you all ना क्या क्या काम करेगा. तो very first is environment maintain करता है, controlled environment, maintained environment it is providing. Then oxygenation कर रहा है, provide कर रहा है. Then
अगर किसी इन्फेंट को इन्फेंट डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, दैट पर्टिकुलर टाइम में सीपैप देने से, मैकेनिकल वेंटिलेशन करने से द बेबी में गेट क्योर्ड, बिकॉज उसकी वजह से डेथ ज़्यादा हो रही है। देन ऑब्जर्वेशन का है तो इन्वॉल्व व्हाट ऑल, ऑब्जर्वेशन के लिए क्या है, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, कार्डियक फंक्शनिंग, ऑक्सीजनेशन, ब्रेन एक्टिविटी। देन प्रोटेक्शन, किस चीज़ से प्रोटेक्शन, फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर, नॉइस, इन्फेक्शन, रैश एंड एक्सेसिव हैंडलिंग। अब इनक्लोज्ड सर्फिस में तो ज़्यादातर लोग थोड़ी ना, नोबडी विल गो, इतना मेहनत नहीं करेंगे कि उसको ओपन करेंगे फिर बेबी को निकालेंगे। सो दिस विल बी लेस हैंडलिंग। जब नीड होगा तभी दे विल बी ओपनिंग द इंक्यूबेटर एंड देन ओनली दे विल बी टेकिंग केयर। अदरवाइज रेडियंट वार्मर में free time also they are taking the baby every time, faltu unnecessarily taking the baby and roaming around, so that will be less handling. So temperature से बचा रहा है, cold temperature से, infection से, noise, excessive noise, enclosed surface है, बिल्कुल बंद है तो उतना नॉइज नहीं जाएगा जितना नॉर्मली जा रहे हैं। ड्रैश एंड एक्सेसिव हैंडलिंग, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग नहीं हो रही है, कम हैंडलिंग करना पड़ रही है requiredly. Incubators may be described as bassinets, bassinet भी बोलते हैं, enclosed in plastic with climate control equipment designed to keep them warm and limit their exposure to germs. क्यों इनको बेसिनेट्स भी बोलते हैं, जिसमें क्यों, क्योंकि ये क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए बनाया है, सो दैट इट इज द बेबीज आर केप्ट, द इन्फेंट्स आर केप्ट वार्म एंड दे हैव अ वेरी नो टू लेस exposure towards the germs. Provision of nutrition through intravenous catheter or NG tube. न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं आईवी कैथीटर से और एल्स एनजी ट्यूबिंग से। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन भी एडमिनिस्टर हो सकती है। फ्लूइड बैलेंस इज बीन मेंटेन्ड बाय प्रोवाइडिंग फ्लूइड टू द बेबी एंड कीपिंग अ हाई एयर ह्यूमिडिटी टू प्रिवेंट टू great a loss from skin and respiratory evaporation. I hope you all remember we have discussed in the previous classes radiation, conduction, convection, radiation, तो वो सबको मेंटेन करने के लिए इट्स अ बेटर टेक्निक, क्योंकि लॉस ही नहीं हो रहा है ना बॉडी से, हीट अंदर ही है तो ज़्यादा लॉस नहीं हो पा रही है एंड फ्लूइड बैलेंस इज बीन मेंटेन इन द बेबी, सो बिकॉज ऑफ दैट it is again a helpful thing. A transport incubator. Transport incubator क्या है? It's an incubator and the most necessary neonatal instrument in a transportable format and is used when a sick or a premature baby is moved. Example, from one place to the other or else one hospital to the other, as from a community hospital to a larger medical facility with a proper NICU unit. It usually has a miniature ventilator, cardiorespiratory monitor, IV pump, pulse oximeter, and oxygen supply built into its frame. Skin sensor is affixed to the abdominal skin midway between the umbilicus and the xiphoid sternum, and incubator is set for maintenance of desired skin temperature between 36.5 to 37.5 degrees centigrade or 37 degrees centigrade. Over here nothing is there, it's about transport incubator. ट्रांसपोर्ट से एज द नेम सजेस्ट इधर उधर ले जा सकते हैं। ये नेसेसरी क्यों है? बिकॉज इन सम केसेस इफ द चाइल्ड इज वेरी सिक, इफ द चाइल्ड इज सिकली दैट पर्टिकुलर टाइम में, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट द चाइल्ड। हाउ? जब भी कोई भी सिक और प्रीमेच्योर इन्फेंट इज देयर, उसको उस हॉस्पिटल में इतना केयर नहीं मिल रहा है, दे आर सपोज टू बी ट्रांसपोर्ट टू सम अदर यूनिट और सम अदर एरिया। तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर इज इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही तो नहीं छोड़ते हैं, वी आर सपोज टू गिव प्रॉपर केयर वाइल डिस्चार्जिंग द बेबी। सो कम्युनिटी हॉस्पिटल से, अगर कम्युनिटी हॉस्पिटल CHC PHC है, अगर वहाँ से कोई बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, तो एक प्रॉपर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बनाते हैं एंड दे ओनली टेक केयर ऑफ द बेबी एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन एरिया टू द अदर। तो ऐसे नहीं है कि आप आवर जॉब इज बीइंग डन तो आपको जहाँ ले जाना है आप ले जाओ। नाउ इट्स नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो, वी आर सपोज टू डू व्हाट with full responsibility. In certain hospitals they have transportation team as well,
कि ये सारे लोग ट्रांसपोर्ट कर कर ओवर देकर दूसरे हॉस्पिटल में आएंगे. Many hospitals don't follow, but we do have to. Then it usually have a miniature ventilator. Miniature means छोटा. Mini ventilator, you can say mini cardiorespiratory monitor, mini IV pump and pulse oximeter. इसमें चेक करने के लिए सब कुछ सामान है जिससे baby's health is being maintained till the baby is being transferred from one area to the other. Then skin sensors are also there. Abdominal area में लगाते हैं between the umbilicus and the xiphoid sternum or xiphoid process. Incubator को set करते हैं desired skin temperature के लिए. It is between 36.5 to 37 degrees Celsius. Then heart monitor, everybody knows क्या काम करता है. सारे बेबीज को मॉनिटर होता है ऑलमोस्ट सारे टाइम में रहता है. बेबी की हार्ट रेट मॉनिटर होती है, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, ब्रेथ रेट और बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं जिसमें यू कैन सी ऑक्सीमीटर ऑल्सो दैट कैन मेजर हाउ वेल द बेबी इज मेंटेनिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी. अगर कुछ भी मॉनिटर को लगता है नॉर्मल नहीं है देन द अलार्म विल बी देयर. That particular heart monitor will be having an alarm so as to indicate that something is wrong in the baby's findings. And talking about radiant warmer. The picture is not clear, but I will show you one more picture. Yeah, there's a radiant warmer. नीचे तक है नहीं है, but I will show you. It is like an open table with sides. Open table है जिसके sides है. It is usually used when a baby is first admitted to an ICU. सबसे पहले जब भी admit हो रहा है baby, वो time में किस लिए यूज करते हैं उजाला? रेडिएंट वार्मर. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. रेडिएंट वार्मर का क्या यूज होता है? मैम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए. और एनी अदर यूज ऑफ रेडिएंट वार्मर? मैम रेडिएंट वार्मर तो इसीलिए. मैम ड्यूरिंग जॉन्डिस भी रेडिएंट वार्मर में रखते हैं प्रीमेच्योर बेबीज को. कानुप्रिया ओनली ना? यस मैम. नो, हम जॉन्डिस के टाइम में फोटोथेरेपी पे रखते हैं, रेडिएंट वार्मर में नहीं रखते हैं. ओके ओके मैम. ओके कानुप्रिया. यस मैम. हाँ, हम इसमें नहीं रखते हैं. रेडिएंट वार्मर में हम रखते हैं नॉर्मल बेबीज को. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, देन मॉनिटर से अटैच्ड है तो वो टाइम में मॉनिटर इज ऑल्सो वी विल सी ना. इट इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन अ बेबी इज फर्स्ट एडमिटेड टू एन ICU. सबसे पहले डिलीवरी के बाद व्हेरेवर द बेबी इज कमिंग, not only for maintenance of the temperature, for monitoring of the baby sanction करने के लिए, because all the equipments are being attached there only. तो एक ही साथ में बहुत सारा काम हो सकती है. So a portable heat lamp with two 150 watts white ordinary bulb or infrared bulb fixed on the wall about 2 to 3 feet above the level of the table or trolley to all is all that is necessary. First of all 150 watt का bulb जो white ordinary bulb है और else you can say infrared bulb है जो कितना fix होता है on the wall. और else I told you all the other day कि radiant warmer के side में लगा होता था पहले, अभी बीच में लगा होता है जैसे flights में you have seen. So it is basically 2 to 3 feet above the level of the table. The infrared heat is preferably because it's directly warms the subject without affecting the temperature of the intervening environment. Babies nursed in the open care system have excessive evaporative fluid losses and have significantly higher than the metabolic rate compared to the babies kept in the incubator. Now, well, क्या बताना है? This is
your radiant warmer. यहाँ पे what all things are there? We had just seen 150 watts का होना है, which is 2 to 3 feet above. Either it is here, as I told you the other day, over here it is, or else over here it is, the bulb or the light, which is an observation light provided to the babies. This portion and this portion, from here to here, it should be 40 to 45 centimeters in length. इतना लेंथ होना चाहिए बेबी से ऊपर से नीचे तक, so that this radiation or this source, heat source, is not affecting the baby over here. यहाँ इतना ज़्यादा नहीं कर देना है, because the baby may get burns because of the temperature you had set. That is why यहाँ पे probes होते हैं. We will see again this whenever we are having physical lectures. That particular time जब भी offline हो जाएगा, that particular time में I will show you all, it's in our lab, how to function it, how it works. So इसमें क्या क्या unit होता है, this is there, then this center line. I hope everything is visible to you all. And then this is the baby setup, baby area. यहाँ पर mattress होती है, small mattress like this, it is there. Bedding set करते हैं, near the baby is kept. Side rails are there, all glass rails are there, you can take it out, you can put it on. Underneath also baby articles are there, stand is there, you can keep baby articles over here, and over here linings are there, so that you can measure the baby's height, weight, and all the anthropometric measurement you can do on the baby. After that, you have as I told you all, over here you have probe, you have the temperature first of all to monitor. Then you have the skin probe जो बेबी के हाथ में अटैच हुआ, बेबी के एब्डोमेन में you're supposed to attach, and then you're supposed to maintain the temperature here. Alarms are there, different type of alarms are there. So some nowadays what you are seeing is feeding alarm is also set over here. Otherwise normal alarms are there, like if the baby is not normal, baby is having some abnormal findings at particular time, the alarm will beep. Off and on switch is there, off and on switch for the bulb, for examination bulb, no, for that bulb also is there. Plug points are at the back, you can put it on, you can put it off. More briefly we will see once we will discuss the topic offline when you will be coming to the college. Any doubt you all can ask. This was all about this. Now NICU topic is completed. Tomorrow we will be starting a different one. Any doubt till now in the topic or anywhere, you can please ask. मैम रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का फंक्शन तो मतलब सिमिलर ही है. दोनों फंक्शन इज सेम ओनली. व्हाट यू ऑल गॉट टिल नाउ आप वो बताओ, फिर आई विल टेल यू कि डिफरेंस क्या है. मोर ओवर यू आर करेक्ट ओनली, काम एक ही है, बट आपके अकॉर्डिंग यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस. दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वाज आस्किंग, आई वुड हैव आस्क्ड यू ऑल. आप बताओ, देन आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन. आपको क्या लग रहा है? any idea आपके अकॉर्डिंग? Am I audible? यस मैम सोच रही हूँ. अगर आपको पता है तो यू से, नहीं पता है तो यू कैन से, आई विल टेल. The basic is as which I told you all about the other class में, radiation, conduction, convection, radiation, ऐसे कुछ पढ़ाया था लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट में भी. यस मैम. देखो इंक्यूबेटर कैसा है. इंक्यूबेटर इज एन इनक्लोज्ड, सब कुछ अंदर ही है ना, बंद है, तो उसमें से कुछ लॉस नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट यू कॉल रेडिएंट वार्मर, तो रेडिएंट वार्मर में क्या होता है, पहले अगर वी कंपेयर रेडिएंट वार्मर विद द इंक्यूबेटर्स, सो जो बॉडी हीट का जो लॉस है, द पार्टीशन ऑफ द लॉस ऑफ द बॉडी विच इज टेकिंग इनसाइड योर बॉडी इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द रेडिएंट वार्मर. सो रेडिएंट वार्मर क्या कर रहा है हमारा, इट इंक्रीजेस द कन्वेक्शन एज वेल एज द इवेपोरेशन. दैट मीन्स हीट लॉस बॉडी से या फिर वाटर लॉस विल बी देयर, बट it will be eliminating the radiant heat loss.
whereas incubator वो काम नहीं करता है, that's all, इतना ही यूज होती है। आप रेडिएंट वार्मर से क्या कर रहे हैं, ये सारे लॉस हो जा रहे हैं उसकी वजह से, एंड कंपेयर टू द इंक्यूबेटर में नहीं हो रहे हैं, दैट्स ऑल। और इंक्यूबेटर हम अगेन पहले बहुत ज़्यादा यूज हो रही थी क्योंकि रेडिएंट वार्मर की वो नहीं हुई थी, डेवलप नहीं हुआ था, रेडिएंट वार्मर वॉज नॉट बीन इन्वेंटेड, वो टाइम में ज़्यादा यूज हो रहे थे। अंडरस्टूड? तो मैम अब इस टाइम पे मतलब इंक्यूबेटर कब यूज कर रहे हैं और रेडिएंट वार्मर कब यूज कर रहे हैं? इंक्यूबेटर ऑल्सो दे आर यूजिंग, बट रेडिएंट वार्मर आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है, बिकॉज आजकल इफ यू विल सी नो, तो जो हीट लॉस है इन सम न्यूबॉर्न बेबीज इट इज बीन रैपिड। सो रेडिएंट वार्मर क्या करता है, दे पर्टिकुलरली वार्म एंड मेंटेन द बेबीज टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर वट एवर द रेडिएंट वार्मर इज मेंटेनिंग इट इज बीन कॉन्स्टेंट। So why you are using radiant warmer? Radiant warmers are used for what? जैसे ही बेबी की बर्थ होती है, सो फॉर सम दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टिल सम कांस्टेंट आवर्स सून आफ्टर द बर्थ, तो बेबी को क्या करते हैं, वी आर स्टेबलाइजिंग द बेबी, किसके अंदर, रेडिएंट वार्मर के अंदर में। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो मैम। ओके।